इसराइल और गजा के बीच में हमास के टेररिस्टिक अटैक के बाद जंग छिड़ गई है और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया है कंप्लीट सीज इस वक्त गजा स्ट्रिप पर। और इस वक्त भी ज़बरदस्त गोलाबारी जारी है पैलेस्टीनियन साइड पर, जबकि हमास फाइटर के अनप्रेसिडेंटेड इनकर्शन के बाद इसराइल में से ये रिटेलिएशन जारी है, जिसके बाद इसराइल ने फॉर्मली डिक्लेयर भी कर दी है वॉर कल के दिन सिग्निफिकेंट मिलिट्री स्टेप्स के साथ, जब हमास ने किया है सरप्राइज अटैक जिसमें मारे गए हैं 1100 से भी ज़्यादा लोग और अभी तक कई हज़ार लोग ज़ख्मी हुए हैं दोनों साइड्स पर। और इसराइली डिफेंस मिनिस्टर की अनाउंसमेंट आई है, इसराइली मिलिट्री जब स्कोर कर रही है इसराइल के सदर्न साइड में रिमेनिंग मिलिटेंट्स को, गार्डेड ब्रीचेस को और सदर्न बॉर्डर फेंस को, जो कि तबाह हुए हैं गजा की साइड पर से एयर रेड्स के कारण। आपने देखी सिचुएशन इजरायली साइड पर। इजराइल ने ले लिया है कंट्रोल गजा के इर्द गिर्द एरियाज का भी जब हमास ने किए हैं अनप्रेसिडेंटेड अटैक, जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इस समय मुसलसल राब्ते में अपने इजरायली काउंटर पार्ट्स के साथ, जबकि यूएस पॉलिटिकल लीडर्स ने प्लेज की अपनी सपोर्ट इजराइल के लिए जब हमास फाइटर्स ने सैटरडे के दिन ब्रीच किया है बॉर्डर को गजा की साइड से सरप्राइज अटैक में, जिसमें मारे गए हैं कई सौ लोग। करीन कैफे दे रही हैं वॉशिंगटन से हमें लेटेस्ट। After more than 48 hours of fighting, Israel's military says it has retaken control of all communities around Gaza. On the ground, Israeli troops work to secure the breach points where Hamas fighters cross the border. It's taking us more time as we expected to get things back into a sort of defensive security posture of people coming in and also defending the communities. While from the air, Israel pounds Gaza with strikes it says are aimed at Hamas and Palestinian Islamic Jihad targets. But scores of women and children have been killed, according to the Palestinian Health Ministry. We are at war with Hamas. And sadly, there might be people that are involved killed. It won't be intentional. And sadly, Hamas have entrenched themselves in a cynical way within the civilian population. Disturbing new videos from Hamas's attack on a music festival show the extent of the terror. Fighters shooting at a hostage at close range. A woman is led away. Her fate is unknown. Hamas claims it is holding more than 100 hostages. But this was completely different attack that nobody was prepared for, and nobody can ever be prepared for such a thing, I guess. The unprecedented attack shaking the international community. Two senior officials say the U.S. State and Defense Departments are moving as quickly as they can to deliver weapons to Israel as part of already existing contracts. President Biden's direction was to make sure that we're providing Israel everything it needs in this moment to deal with the attacks from Hamas. और अब आपको बताते हैं हाल यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद इजरायली और पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स का। जी हाँ, जिन्होंने निकाली हैं डुअल रैली स्टेट ऑफ फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल के एरिया में, जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और शो कर रहे थे अपनी अपनी सॉलिडारिटी। और ये डुअल रैली निकाली गई है कल संडे के दिन सपोर्ट करने के लिए इजरायल और पैलेस्टाइन को। Free Palestine! Free Palestine! ये विजुअल आप अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा के देख सकते हैं, जहां पर दोनों साइड्स पर लोग मौजूद हैं। We're overwhelmed with emotions, and I pray for my people. I pray for, civilians on both sides. Civilian casualties, I mean, their lives are valued just as much. और इजरायली सपोर्टर्स आए हैं आगे जब जारी थी प्लान पैलेस्टाइन सपोर्ट रैली सैन फ्रांसिस्को में भी कल इजरायली कॉन्सुलेट के बाहर, जहां हुआ है फेस ऑफ डुअलिंग डेमोन्स्ट्रेटर्स का आपस में बाहर इजरायली कॉन्सुलेट के, जो कि लोकेटेड है डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को में, कल संडे के दिन, जिस मौके पर प्रो पैलेस्टीनियन रैली अरेंज की गई थी जब हमास ने लॉन्च किया है सरप्राइज अटैक, जिसमें मारे गए हैं कई सौ लोग और घायल हुए हैं कई हजार गजा के एरिया में। Shame! Shame!
Dueling demonstrators faced off outside the Israeli consulate in downtown San Francisco Sunday. Resistance is justified! Over violence in Israel. The pro-Palestinian rally called All Out for Palestine comes one day after Hamas launched a surprise attack that killed hundreds. I am Jewish, and I am ashamed of what Israel is doing to the people of Palestine. I was in Palestine a month ago. I saw for myself how the Palestinian people are being oppressed. El Cerrito resident Seth Morrison held a sign that read, "Jews for Palestinian Liberation." Impassioned protesters carrying signs and flags on both sides yelled, "Free Palestine" and "Free Israel." SFPD officers in riot gear and barriers kept the two groups separate as tensions rose. What do you think of this surprise attack that happened Saturday? You know, violence won't solve anything. But when our people are oppressed, when they're held in the conditions of Gaza, like they're in prison, how can you blame them? You know, many of us have been saying that the Palestinians are going to rise up. They're not going to, and you cannot expect them to sit on their hands. San Francisco resident Jay Connor said he wanted to show support for his Jewish friends. It's abhorrent, it's terrible. There's no reason why anyone who should be out vacationing, having a party, should have to be kidnapped, hostage, raped and murdered and beaten. It's just shocking, and it's the fact that we're still even arguing Jewish existence in 2023 is pretty shocking to me. Killers, murderers, and standing here in front of the Israeli, how shame, how unforgivable. Both sides marched in different directions following the rival rallies. The unfortunate thing is if we were to move forward, they'd have to resolve the problems out there first. Because obviously out here you can see there's two different degrees of anger and frustration. There's a lot of shouting going on, but what would you like to tell that side? What I would like to tell them is that our Jewish tradition is one of peace. It's one of coexistence. And we will only have peace when we respect the rights of all human beings.